A very good morning to all of you. Welcome back to Unsarkari. So, starting with our newspaper analysis for 21st of December. So, Lok Sabha passes bills to replace the British era criminal laws. So, this has been passed by only Lok Sabha. Rajya Sabha जब इसको pass कर देगी, they would become the laws. So this is an example of decolonization. हमने बात करी कि old जो laws से जो replace हो जाएंगे, that is IPC 1860 से we had this, Indian Evidence Act 1872 and CRPC 1898. Now they would be replaced by these three bills, जो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य bill and Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita bill would be replacing them. So this is a pure Indian law after removing all the British imprints. So we might be having few elements जो in पुराने laws में थे, but they उनकी application उनकी relevance के context में will be keeping them. Apart from this, we have been discussing ki the definition of the terrorism. यहाँ पे mentioned भी again defining terrorism. So we would now be also including separate category like in general crime law. So defining terrorism included it as a separate category. Apart from this, the definition has also been widened. It would be now also including the economic infrastructure. So any attack on the economic infrastructure, for example, फाइनेंशियल जो हमारा इकोसिस्टम है, जो नेटवर्क है, इफ देयर इज एन अटैक ऑन दैट, साइबर अटैक हो सकता है, सो दैट वुड आल्सो बी कंसिडर्ड टू बी अ टेररिस्ट अटैक एंड दैट वुड बी बुक्ड अंडर the UAP Act also. So these are important areas regarding this. Apart from this, Lok Sabha again suspends 2 more opposition members as protest continues in the well of the house also. So because they've been creating disruptions, they've not been letting the parliament, the session to function as per the constitutional provisions. So we are seeing of late the opposition MPs, they are being suspended. So in this context, we have again covered up what is the procedure for the suspension of the MPs. So the ultimate, or we can say the power lies in the hands of the Speaker of the Lok Sabha and the Chairman of the Rajya Sabha when it comes to taking the final decision on this. So there's a committee जो recommend करते हैं what should be the decision, but that is recommendatory in nature. So this is there, and suspension can be for like it can be for few days and it can be for the entire session also. So that also depends upon the speaker and the chairman. So बात यहाँ पे ये आती है कि ये जो बेसिक्स थे ये क्लियर है. अब मेन इंपॉर्टेंट एरिया ये है कि इज इट द सॉल्यूशन, would this allow जो हमारा actual framework है पार्लियामेंट का, when we say the role of opposition is also very important, क्या सस्पेंशन करने से MPs के क्या हम उस चीज को कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टॉर्ट कर रहे हैं? क्योंकि अगेन वी नो कि जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग करंट गवर्नमेंट है, they are there, but ये I would say कि this becomes one sided thing. Opposition MPs अगर suspend कर दिए जाएंगे तो फिर who would be left in the parliament to oppose and to raise some critical points? So at the same time, it is also important for the opposition to also understand कि वो जो जिस तरीके से they've been opposing and not letting the session to function, वो उसमें obstruction करने से again कोई ultimate purpose serve नहीं होगा. तो दोनों तरीके से it has to be understood. आई थिंक यहाँ पे औशक हाँ, आपको और कुछ पॉइंट रेज करना है? इसे बोलना है कि जो एक वेल डिफाइंड रूल्स होना चाहिए विथ रिगार्डिंग टू द सस्पेंशन, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि जो इंटरप्रिटेशन बाय द लोकसभा स्पीकर या फिर राज्यसभा में जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है या चेयरमैन, राज्यसभा के चेयरमैन हो गए, उनका इंटरप्रिटेशन कैसा रहे, तो क्या उसके ऊपर में कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन रहे, ऐसा कुछ प्रोविजन है, तो राइट. ऐसा होना चाहिए. ओके. क्योंकि ऐसे तो कुछ भी बोल सकते हैं ना कि प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ओपन इंटरप्रिटेशन है ना एथिक्स कमेटी का या फिर उसका, तो हाँ, कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं. राइट. हाँ, एथिक्स कमेटी और प्रिविलेजेस कमेटी दो मेन कंसर्न कमिटीज है इन दिस कॉन्टेक्स्ट. देन वी हैव सीन यहाँ पे यूएस पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो कोलोराडो कोर्ट बार्स ट्रम्प फ्रॉम इलेक्शन, so he'll not appear on the ballot in next year's presidential election because of his role in the January 6, 2021 attacks, जिसको हम US Capitol Hill attacks भी बोलते हैं, by his supporters. So his supporters, they entered the White House. वो again जो visuals थे, they went viral on social media. So the verdict will likely be taken up by the US Supreme Court.
So just for a simple understanding, we should be knowing about the world politics also. So the tourist takes a selfie near a huge icicle formed in the uh, Tangmarg, which is near Srinagar. So we know that Srinagar is famous, or we can say a major part of the people's livelihood depend upon the tourism. So this is there. In this context, we have again seen that after the abrogation of Article 370, the tourist activities and tourist influx is increased. And important areas of tourism, Oshik, if you can highlight. इम्पॉर्टेंट एरियाज टूरिज्म इंडिया में सबसे ज़्यादा रिलीजियस टूरिज्म होता है, उसके बाद फिर प्रसाद प्रसाद हो गया, दूसरा मेडिकल टूरिज्म सबसे ज़्यादा कर सकते हैं। हाँ, यस, ठीक है। तो मेडिकल टूरिज्म सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है तमिलनाडु में, जैसे प्रवेश ने बोला था। ओके, और ठीक है, चलो, दैट्स फाइन. So have you seen concern rising over the new variant of COVID-19, JN.1? So government issues an alert after we are seeing 21 cases of this variant, and a meeting was also held on this. So this is, we are seeing this variant is spreading in states of Kerala, Jharkhand, and Karnataka. So health ministry will also be issuing an alert on this, and this is the variant. So main challenge यही है कोरोना वायरस में, जो viruses से related diseases होती है उनसे जो gene mutations हो जाता है, then जो हमारे पास medicines हैं या जो पहले वाला treatment है, vaccines हैं, उनकी efficacy और effectiveness कम हो जाती है with these new mutating genes. So एक ये भी challenge है. And so now it all depends कि जो हमारे lessons थे during the COVID-19 first and the second wave, how we are going to, utilize them during this particular scenario, or if this becomes again, this spreads on a larger scale. So यहाँ पे औषध जो gene mutation होता है, I think that happens on its own, वो self mutating gene होता है, right? हाँ, हो सकता है। ठीक है. कि हर एक बॉडी डिफरेंट है ना, तो कैसे पता लग सकता है कि म्यूटेंट कैसे हो रहा है हर एक बॉडी में। रिएक्शन डिफरेंट है, तो कभी कभी क्या होता है कि म्यूटेंट हजारों म्यूटेंट होता है, तो बाकी म्यूटेंट मर जाते हैं लॉन्ग टर्म में। कुछ कुछ म्यूटेंट इतना ताकतवर होता है कि आई थिंक इट स्प्रेड मोर क्विकली, मोर इफेक्टिवली। ठीक है. So the Central Bank of India, this advertisement talks ki bank for all the generations and 113th Foundation Day. So this is an important area. ESG vision जो है, we are seeing कि corporate governance में and sustainability के perspective से, this is one area which is being adopted by more corporates and more institutions and bodies. So ESG is environment, S is for, I think, social, and G is governance. So committed towards net zero by 2028. So overall India's target is 2070. So environment, social, and governance, they would be focusing upon collectively, there would be synergy and coordination between all these major domains. So reducing the greenhouse gases emissions, building green portfolio, develop sustainable sourcing, and embrace renewable energy. So यहाँ पे जो वर्ड लिखा है, बिल्डिंग ग्रीन पोर्टफोलियो, आई थिंक इट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, कि ग्रीन एरियाज में जो हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, आई थिंक ये वहीं वहीं उसी चीज की बात हो रही है. So center and states के बीच में there was issue regarding even the appointments of the vice chancellors also. So another issue is regarding the governor and how the government is been reserving the bills for the presidents, the large number of bills that are being reserved. Secondly, the governor not taking action on the bills for almost, we can say, 2 to 3 years. So here we have discussed कि proper timeline होनी चाहिए, since Article 200 the Constitution does not specify the exact time period within which the governor should give the assent, or even the President of India.
We have a separate article for that. So here we talk about कि ये एक रिफॉर्म होना चाहिए, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होना चाहिए. जैसे डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स के केस में सुप्रीम कोर्ट हैड सेड कि 3 months का टाइम पीरियड इज देयर विद द स्पीकर ऑफ द state assembly. So this should be the case here also. फोर हंड्रेड 4,872 infant died between April and October. In ये वाला Maharashtra. एक बोले जो कि Infant क्यों mortality rate, right. breathing related ailment Hmm. in Where is it mentioned? मेरे को दिखा ही नहीं अभी. second paragraph. Breathing related ailment. Breathing related ailments. So respiratory diseases, and what is actual reason क्या है, मतलब what is the disease, यहाँ पे it is written कि breathing related है. So ये एक again example है कि are we really prepared for such future epidemics or pandemics. यहाँ पे स्पेसिफिकली इन्फेंट्स को टारगेट किया जा रहा है, या फिर एक ऐसा डिजीज होता है कि ओनली चिल्ड्रन दे आर द टारगेट. कोविड-19 में हमें ऐसा नहीं देखने को मिला कि बच्चों को इतना ज्यादा इफेक्ट हुआ. सो दिस नाउ रेजेस क्वेश्चंस. दिस इज अ ह्यूज नंबर. एंड ऑफ लेट हमने लाइक पहले के अगर इंसिडेंट्स की बात करें तो इन स्टेट्स लाइक बिहार वी हैव सीन केसेस ऑफ जापानीज encephalitis which is again which impacts the brain of the child. तो इसको ब्रेन फीवर भी बोलते हैं. हाँ, ये पद्मा Hmm. विनर मोहिनी की थी. Vinigiri passes away. So Women right activist. she was the former chairman of the National Commission for Women and Padma Bhushan awardee, Dr. V. Mohini Giri. So woman, she's an iconic women's right activist, founded the Guild of Service in 1979, dedicated to empowering the women, underprivileged children, and war widows. So her example can be cited in the answers. ओके सो इस एडवर्टाइजमेंट से क्या बोलोगे. गन्ना किसानों का बढ़ाया मान, हाईएस्ट शुगरकेन रेट इन द कंट्री. तो हमने बोला है कि एमएसपी डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, और भी क्रॉप्स के लिए मिलना चाहिए. सेकेंडली एमएसपी क्रॉपिंग पैटर्न एक्चुअली डिसाइड करता है किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में. तो हम बात करें कि शुगरकेन कल्टीवेशन कम होना चाहिए, या उसको भी आप कैसे सस्टेनेबल तरीके से एक्चुअली प्रैक्टिस कर सकते हो सो दैट water is used judiciously. So अगर high MSP rate guarantee किया जाएगा farmers, तो obviously farmers would be going for the sugarcane cultivation, which is we can say a water intensive crop. And एक और जो issue है, we've talked this in this context, is कि sugarcane cultivation only for the purpose of ethanol production. So उसकी वजह से जो former motive था कि wastage of food को हम जो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, जो फूड वेस्ट हो रहा है उसको भी हम वेस्ट में ना जाने दें, एंड दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द इथेनॉल प्रोडक्शन व्हिच इज अ क्लीनर फ्यूल. So we have the ethanol blending target of 20% by 2025. We have met with the 10% ethanol blending with petrol. So this is the thing. So I think यहाँ पे we should look for कि states like Punjab, Haryana, वहाँ पे we are seeing water table is going down. We are seeing जो बोलते कि मीठा पानी कम हो रहा है, खारा पानी which is the salted water, that is more available. So that would be impacting the crop productivity also. So this cannot sustain for a longer time period given the impacts of climate change at the same time. So Ashik, what would you say on this? यस, Hmm. वही बताया कि तो शुगर कैन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए ठीक नहीं है, Right. इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी स्टेट प्रमोट करे, Hmm. क्योंकि इसका हमेशा बढ़ाया जाता है, हर बार देखा जाता है. तो एमएसपी रेट, उसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें. So Kerala and Karnataka are witnessing uptick in the COVID-19 cases. So again, our health system needs to be now guarded against spreading cases. So anticipatory bail क्या होता है? Karuna, you can look for this. Ashik, you can share अगर आपको पता है anticipatory bail. देख लेते हैं एक बार.
हाँ, आई थिंक एग्जैक्टली। इफ वी हाँ गो ट्राई टू डी कोड दिस, तो ये बोल रहा है एंटिसिपेटरी बेल ऑन द बेसिस ऑफ कि बेल आपको दी जा रही है ऑन द एंटिसिपेशन कि आप फ्यूचर में कोई क्राइम नहीं करोगे, या जो कंडीशंस ले डाउन की गई है कि सपोज यू विल नॉट लीव अ पर्टिकुलर रीजन और यू विल नॉट लीव इंडिया फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन, तो ऑन दैट एंटिसिपेशन आई थिंक इसको हम एंटिसिपेटरी बेल बोलते हैं। प्री रेस्ट। अरेस्ट बेल होता है, इट इज a लीगल प्रोविजन दैट अलाउज एन accused person टू अप्लाई फॉर बेल बिफोर बीइंग अरेस्टेड। तो हम्म। अरेस्ट के पहले होता है एंटिसिपेटरी, मतलब एंटिसिपेट। प्री बेल है, मतलब प्री अरेस्ट बेल है एक तरह ओके। से। हम्म। ठीक है। आप छोड़ेंगे नहीं, वही बताया आपने कि आप बाहर नहीं जाएंगे, आप रहेंगे घर में, लेकिन अरेस्ट करने के पहले है। ये रेगुलर बेल होता है कि इट इज डायरेक्शन गिवन बाय द कोर्ट, एनी कोर्ट इन इंडिया, टू रिलीज द पर्सन हु इज ऑलरेडी अंडर अरेस्ट एंड केप्ट इन पुलिस कस्टडी। इंटरिम बेल होता है कि टेम्परेरी एंड शॉर्ट पीरियड के लिए दिया जाता है, कुछ अगर कोर्ट के द्वारा। एंटिसिपेटरी होता है कि आप बाहर नहीं जाएंगे, और इशूड ओनली बाय सेशंस कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है। ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन के हिसाब से दिया जाता है। तो तीन हो गए बेल। ठीक है। Then in this picture you can see that कोलाटम is the stick dance, जैसे गुजरात में भी है गरबा. So this is being performed in the Vijayawada. Vijayawada is in which state? Andhra Pradesh. So single ticket would be there for all modes of travel very soon in Delhi. So this is also we can say an example of good governance, increasing the efficiency. Delhi government will soon launch a system under which people in the city, they will be able to travel on multiple modes of transportation using a single ticket. Like अभी अगर आपको मेट्रो में ट्रैवल करना पड़ता है तो आपको टोकन्स मिलते हैं, अगर आप बसेस में ट्रैवल करते हैं तो आपको टिकट्स खरीदनी पड़ती है अलग से. So एक single ticket system would be available online, that too. So it is yet to determine the ticket rates kya honge, and still in the process of finalizing the multimodal integration needed for the seamless working of the system. Tickets will be available on the open network. So अभी again ये challenge यही है कि आप price कैसे determine करने वाले हो आप इस चीज का, क्योंकि this would be single ticket system. यस। Coming to editorials, so सिक्योरिटी ब्रीच जो भी रिसेंटली पार्लियामेंट इंसिडेंट हुआ था, दैट मस्ट लीड टू स्वीपिंग चेंजेस. सो हैव यू आर सीइंग कि देर आर स्पाइक बैरियर्स, bollards, ड्रॉप गेट्स हैं विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो डिप्लॉयड, स्कैनर्स हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइसेज आर देयर, एंटी एक्सप्लोसिव चेक्स किए जाते हैं, एडिशनल मैन पावर दैट फॉर्म द लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी. सो आफ्टर दिस अटैक 2001 में जो पार्लियामेंट टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके बाद ये सब इंट्रोडक्शन, ये सब चेंजेस किए गए थे. एंड डिस्पाइट दैट वी आर सीइंग कि ऐसा कुछ मतलब सिक्योरिटी ब्रीच हो रहा है, सो व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या चेंजेस या क्या और न्यू इंट्रोडक्शंस होने चाहिए. सो हाउ डिड द सिक्योरिटी लैप्स अकर, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है. ऑल्दो द इन्वेस्टिगेशंस आर स्टिल गोइंग ऑन, एंड सो हम इसको बाद में ही लेंगे. इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, सो यहाँ पे वी कैन लुक इनटू कुछ इंटरेस्टिंग यूनिक पॉइंट मेंशन्ड है. तो so where does the responsibility lie? The accountability question, and certainly not alone with the men at the screening stations. Obviously, yeah, question यही है accountability का, who is accountable. So here, like we have Director General, the Bureau of Civil Aviation Security, they have recently announced that Delhi Airport is going to get full body scanners and computer tomography, X-ray, CTX machines to ensure more thorough but also faster screening. तो क्या ऐसी machines parliament भी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, question है. And issue of responsibility की बात हो रही है. Head of the Parliament Security is a joint secretary of security, head of Parliament Security, and this post has been vacant at present. So now this raises questions. And the post of two chiefs of the Central Reserve Police Force and the Central Industrial Security Force involved with the Sansad Security, they are also vacant. So this raises questions कि मतलब इतनी critical post, how can they be vacant? Apart from this,
So it is not like कि जैसे SPG commandos है, they are manned by India's best IPS officers who are always engaged in daily operations. They monitor them for the improvements as also score for the latest technology to induct. तो it is about leadership. अगर leadership वाली positions ही vacant रहेंगी, so ऐसे इंसिडेंट्स के नंबर इंक्रीज हो सकते हैं. Ministry of Home Affairs, Parliament turned to for all its security needs after 2001 MHA, which refurbished the security set up at the Parliament House. So changes हम देख चुके हैं, what changes were done after the 2001 attacks. And targeting of the MP who recommended the issuance of passes to the intruders may be unfair. Right from 1952, अगर हम बात करें, MPs across the parties, they've been liberal in recommending the names of the people eager to witness the Lok Sabha proceedings. तो एक एरिया ये भी है, visitors जिनको अलाउ किया जाता है, जिनको passes इशू किए जाते हैं, 1952 से ये सिस्टम चला रहा है. तो इसके ऊपर आप अब जाके क्वेश्चन रेज करोगे तो दैट वुडंट साउंड लॉजिकल. बट यहाँ पे डेफिनेटली गिवन द चेंजिंग टाइम्स और उस टाइम पे जो रिस्क थे वो आज के टाइम में नहीं है. आज के टाइम में डिफरेंट रिस्क है, दे माइट बी मोर रिस्कियर. सो वो सारी चीजें दैट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू. इवन हम जब बात करते हैं कि रिकमेंडिंग द नेम्स ऑफ द विजिटर्स बाय द एमपीज, सो इट इज नॉट कि सिस्टम बंद किया जाना चाहिए. सो कमेटी की बात की जा रही है. अपार्ट फ्रॉम दिस, लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो इंडिया इजिप्ट रिलेशनशिप की हम बात कर चुके हैं. सीसी अगेन. सो गवर्नमेंट गवर्निंग इजिप्ट during an economic crisis is not going to be easy. So Abdel Fattah al-Sisi, the Egyptian president who captured power through a military coup in 2013, winning a re-election was the easy part for him. So Egypt's presidential elections हुए हैं always when with huge margins, and December 10 or 12 elections जो भी हुए हैं, he's a former general. He faced three little known candidates. So there was like hardly any strong opposition against him. And he won 89% of the vote. So he's back in power. So यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि issues की अगर हम बात करें, hyperinflation is one big issue in the economy of Egypt. 35% of the inflation has already pushed many Egyptians into poverty. So food security, और हाँ, इंडिया external. इजिप्ट के बीच में रिलेशनशिप का आप बोलो, मैं फिर कंक्लूड कर दूंगा. India-Egypt relationship में we've seen firstly ancient times में, as I mentioned earlier, also trade relations with their Mesopotamian and Egyptian civilization के साथ, when we had the Indus Valley civilization. Apart from this, India-Egypt relationship is important from the perspective of it acts as an important catalyst when we talk about strengthening India's relation with the African continent. So there the सही role, बात है, ये हाँ, पहला पॉइंट हो. हाँ. there the role हाँ. of Egypt becomes important. Apart from this, अभी current role, अरबिक कंट्रीज हो गया. Arabic दो चीज हो गया, एक अफ्रीकन हो गया, अरबिक हो गया. और हम्म जो मेडिटेरियन सी के अंदर रूट है उसको भी कनेक्ट करता है, तो इसलिए इजिप्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है. बाकी हाँ, फिर तो आप बोल ही सकते हो, ठीक है. डिफेंस हो गया, टाइज हो गया, inflation हो गया. राइट. हाँ, जो ट्रेड पास होता है फ्रॉम द रेड सी बाय द स्वेज कैनाल, तो वहाँ पे हाँ. का जो लोकेशन है दैट इज इम्पोर्टेंट. सो और जो सेकंड मेजर इशू है विद इन द इजिप्शियन इकोनॉमी, एक्सटर्नल डेट इज एट $162.9 billion. इट इज समवेयर 40% जो उनकी जीडीपी है, दैट इज द शेयर ऑफ एक्सटर्नल डेट. अपार्ट फ्रॉम दिस, इट इज फेसिंग हैवी रीपेमेंट्स, क्योंकि डेट बहुत ज़्यादा है तो रीपे भी आपको करना पड़ेगा. एंड अभी रिसेंट जो इसराइल वॉर ऑन गाजा है, सो उसकी वजह से सिचुएशन इज बिकम मोर वॉलेटाइल. सो हाउ इजिप्ट का क्या रोल रहेगा? सो ऑफ लेट तो वी हैव सीन कि ह्यूमैनिटेरियन एड में भी इनिशियली तो इजिप्ट वाज नॉट कमिंग फॉरवर्ड. जो रका रखा क्रॉसिंग, जो बॉर्डर क्रॉसिंग है बिटवीन द गाजा स्ट्रिप एंड इजिप्ट, दैट इज कॉल्ड द रका क्रॉसिंग. So उसके through they have allowed the people, I think, to enter into Egypt, and they have provided humanitarian aid, food, and जो basic services and necessities है वो provide की गई है. And Egypt को earlier जो region है Sinai Peninsula, that is known as the area around or the area of Egypt. So if the war drags on, he will come under greater pressure to let the Palestinian refugees in. So I think अभी तक allow नहीं किया गया refugees to enter into Egypt.
सो उसकी वजह से और ज्यादा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, गिवन राइट नाउ इवन जो अनस्टेबल हम बोल सकते हैं या हायर कंसर्न्स रिलेटेड टू द इकोनॉमी ऑफ इजिप्ट राइट नाउ। तो अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी इजिप्ट और इंडिया के रिलेशन ट्रेस बैक कर सकते हैं किसी एम्परर के टाइम पे। आई थिंक औशिक कैन शेयर द डिटेल्स इस कॉन्टेक्स्ट में। एक इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड पे वी हैड द ट्रेड, एक वो पॉइंट हो गया। मिडीवल टाइम्स में मौर्य पीरियड पे भी था शायद। और उसके अलावा जब हम वो देखते हैं खलीफा आंदोलन चला था जब 1919 के आसपास, जो हाँ राइट। इजिप्ट में चेंज, उसके वो ये तो दो ये तीन ही हो सकते खलीफा हैं मेरे इजिप्ट के अकॉर्डिंग। कॉन्टेक्स्ट में नहीं था, दैट वाज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टर्की खिलाफत मूवमेंट। इजिप्ट का रोल नहीं हाँ, था अकॉर्डिंग टू मी, दैट वाज टर्की। आई थिंक अशोका एडिक्ट्स जो है उसमें भी मिलता है हमें रेफरेंस इजिप्ट के लिए। Okay, you can search that specifically and share on the group exact details. Oshik, would you like to share some points on this? नो मानसी, you continue. ठीक है. So India's defense budgeting and the point of deterrence. So डिफेंस बजटिंग या डिफेंस एक्सपेंडिचर के अराउंड जो एक तो ग्लोबल लेवल पे कंसर्न यही है कि कौन सी कंट्रीज अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहे हैं, क्या इंडिया को भी डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने की जरूरत है या नहीं। एंड इन दी ओवरऑल अगर हम इंडिया के डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं तो वी आर प्रमोटिंग इंडिजनाइजेशन, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, उसके और भी मल्टीप्लायर इफेक्ट्स होंगे. सो दैट इज वन थिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इवन सिक्योरिटी एंड दिस वुड ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग आर इम्पोर्ट डिपेंडेंस, सो दैट वुड बी सेविंग आर फॉरेक्स रिजर्व्स एट द सेम टाइम. एंड इंडिया को जो एक बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंस का एलिमेंट या सोवरेनिटी का एलिमेंट वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा बिकॉज वी विल बी गोइंग मोर फॉरवर्ड विद द डोमेस्टिक प्रोडक्शन. So this is there and यहाँ पे I'll look into more details. औशिक तक आप इसको डिस्कस कर सकते हो और क्या एक एरियाज हो सकते हैं अराउंड डिफेंस. इंडियन डिफेंस बजटिंग अगर बोला जाता है तो पहली बात 3 एरियाज पर फोकस होता है कि आप रिसोर्सेज जो है रैशनलाइज करते हो. फॉर एग्जांपल, अगर अ, अगर 1 लाख करोड़ है तो इसको कैसे आप बांटोगे बिटवीन द कोस्टल नेवी हो गया, या फिर आप नेवी हो गया, फिर एयरफोर्स हो गया, और दूसरा आर्मी हो गया. तो पहले किसको क्या मिलेगा, तो होता है ना कि नेवी अपना प्रोक्योर करते हैं इक्विपमेंट, फिर आर्मी अपना करते हैं. तो आपस में कोऑर्डिनेशन करने के लिए डिफेंस बजट को यूज करने के लिए इंपॉर्टेंट सीडीएस का रोल यहाँ पर आ जाता है, जॉइंट कमांड का रोल आ जाता है यहाँ पर. दूसरा जो बात है लॉजिस्टिक डिजाइन, ये हम लोग का 10 दिन तक कर सकते हैं लेकिन 40 दिन तक होना चाहिए. लॉन्ग यहाँ पर सेकंड लाइन लिखा हुआ, 10 दिन तक इंटेंस वॉर लड़ सकता है इतना भी है, लेकिन 40 दिन के करने के लिए और थोड़ा डिपेंडेंसी कम होना चाहिए बाकी फॉरेन पावर से. तो इसलिए इंडिजिनस ड्राइव जरूरी है, आत्मनिर्भर भारत हो गया. और इंडिया का डिफेंस बजट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि सबसे ज़्यादा जो पेमेंट है इट इज़ ऑन द सैलरी एंड पेंशंस. और सेकंड है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर आई थिंक इट इज़ ओनली $10 to $15 billion, जो बहुत मीगर है एज कम्पेयर टू बिग कंट्रीज यूएस, चाइना एक्सेट्रा. तो लिखा हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज डिक्रीज भी हो रहा है. एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज आस्क्ड 1,76,000 फॉर द कैपिटल एक्विजिशन, लेकिन 1,62,000 ही मिला उसको, तो डेफिसिट रहा है. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ते रहना चाहिए. तो एक ये हो गया एरिया. ठीक है. तो इनोवेशन बढ़ाने के लिए कोई स्कीम है, आईडी स्कीम हो गया. फिर दूसरा हाल का HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, DRDO, कैसे वो इम्प्रूव करेंगे सेल्फ सफिशिएंसी R&D में. और हर एक कंट्री से कैसे डील होना चाहिए, इंडिया साउथ कोरिया, इंडिया यूएस, इंडिया जापान एक्सेट्रा, वही बात करें. हम्म. क्योंकि हर बार इंपोर्ट नहीं कर सकते ना. राफेल फॉर एग्जांपल इंपोर्ट कर रहे हैं, लड़ाई हो गया तो फिर आप इक्विपमेंट कहाँ से लाएंगे, उसका फिर रेट्रोफिटिंग कैसे करोगे. हाँ राइट. डिपेंडेंसी तो बड़ा हुआ है ना अभी तो फ्रांस के ऊपर ही है. तो हम्म. इंडिजिनस इंपॉर्टेंट. ओके सो यहाँ पे एक जो एरियाज लिखे हुए हैं कि इंडिया का जो डिफेंस बजट है रियल टर्म्स में मोर और लेस लंबे टाइम पीरियड तक दैट हैज बीन स्टैग्नेंट, ना तो वो ज्यादा कम हुआ है ना तो वो ज्यादा इंक्रीज हुआ है.
और परसेंटेज टर्म में अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो पूरा बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर डिफेंस सेक्टर में वो डिक्लाइन होता हुआ जा रहा है। सो ये कंसर्न के एरियाज है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक तो जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी गोल्स है या जो हमारा डिफेंस बजट है उसमें इट नीड नॉट बी पॉपुलिस्ट इन नेचर, उसमें जो इलेक्टोरल इम्पेरेटिव्स हैं उनका इंट्रूजन उनका इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, दैट वुड बी अनप्रोफेशनल। गिवन यहाँ पे आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हो तो यहाँ पे इलेक्शन से रिलेटेड या इलेक्शन से रिलेटेड कुछ ऐसे डिसीजंस नहीं आ सकते जो डिफेंस सेक्टर पे इम्पैक्ट करें। Apart from this, यहाँ पे there's important saying by General VP Malik sir, who said कि we will fight with what we have. हम उसी से फाइट कर पाएंगे after like during the Kargil conflict this was a statement, or should the required potency drive the allocations for the defense। मतलब दो एरियाज है जो हमारे पास है, इक्विपमेंट्स है, जो डिफेंस बजट है, वॉरशिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, हम उनसे ही फाइट कर सकते हैं। उस टाइम पे जो हमारी पोटेंसी है, मतलब उसके बाद आई थिंक आफ्टर द वॉर जो हमको रियलाइज होता है कि एक्चुअली हमें कितना चाहिए, क्या पॉसिबल सिनारियोज फ्यूचर में हो सकते हैं, फॉरकास्टिंग के बेसिस पे, एक्सट्रापोलेशन के बेसिस पे वी नीड टू डिसाइड कि हमारा डिफेंस बजट कितना होना चाहिए, व्हाट शुड बी चेंजेस। तो थ्रेट्स की बात करें तो नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे डेफिनेटली हम बात करते हैं टू फ्रंट वॉर की पॉसिबिलिटी हो सकती है, दैट इज at the front of China and Pakistan. So are we really prepared to deal with that अगर ऐसा कुछ होता है in future? And Western neighbors present the benign stance as indicative of a lessening of the risks. So this is a good thing ki if the risk is reducing, but again we need to be prepared to deal with such a war if if it happens. So we can't ignore that also. So judicious assessment is required. How are we actually planning ki hamara how we'll be prosecuting the next war if it happens? So कुछ inescapable necessities है जब हम बात करते हैं challenges from the perspective of China, Indian Ocean में it has been increasing its assertiveness, string of pearl theory की हम बात करते हैं, मलक्का स्ट्रेट एक important choke point है जब हम बात करते हैं from the perspective of जो trade flow करता है towards Southeast Asian countries. So ये भी this is one thing which is inescapable, we can't ignore this. So इस context में जैसे हम बात करते हैं इंडिया की सागो पॉलिसी है, इंडिया says कि इंडिया is a net security provider in the region, so that is important, we follow the neighborhood first policy. So army को modernize करने की भी जरूरत है given the modern technologies that China has and considering also the क्या size होना चाहिए. So logistics design पे we are focusing upon, and यहाँ पे जो ये term है 10I मतलब 10 days intense war के लिए India prepared है, but now we are shifting focusing more upon the 40I scenario मतलब 40 days का अगर कोई intense war होता है तो we need to be prepared for that also. So you go to a war with industrial base जो आपके पास है, not the industrial base जो आपको चाहिए, तो जो आपको चाहिए वो अगर आपके पास है ही नहीं तो आप you can't do anything at that point of time. So we're promoting आत्मनिर्भरता, we're promoting indigenous drive, indigenization. So ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। एंड यहाँ पे स्कीम्स की बात करें तो डिफेंस एक्सेलेंस आईडेक्स स्कीम, सर्विस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट सच एज बाबा मेहर सिंह कंपटीशन किया जाता है फॉर द अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। तो येस यूएवीज एक इम्पॉर्टेंट इवॉल्विंग हम बोल सकते हैं डायनेमिक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस डेटा की बात करें तो चाइना इंसिडेंटली स्पेंड $421 बिलियन इन 2022 डिफेंस एक्सपेंडिचर में, विच इज उनका 2.54% ऑफ द GDP। सो इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी हमारा एक्सपेंडिचर इज ओनली 0.7% ऑफ द GDP. सो दिस नीड्स टू इंक्रीज. Our rank is 53rd in this context. And so यहाँ पे we say कि allocation needs a substantial jump. It is good कि 25% allocation was for the private sector. तो role of private sector also becomes important in the context of manufacturing, we can say. So restructuring of the ordnance factory board, this was done. This is an important area. So cost be important at the same time, and one must not spend scarce monies to face a 10 feet tall adversary when a pygmy exists on the other side. So, but what if there are two of them, both militarily adept and not pygmies? So, एक यहाँ पे phrase use किया गया है. And again, Indo-Pacific region में India does the joint military exercises भी हम करते हैं. That's also part of our policy when we talk about the Malabar exercise with the Quad members. So multiple areas है regarding the defense sector in India. तो मेरा एक क्वेश्चन है कि
अभी क्या हम कह सकते हैं कि जैसे डिफेंस के सेक्टर में इंडिया एक पॉइंट पे पहुंच चुका है कि हमारे लिए रिसोर्सेज सफिशिएंट है, तो हम क्यों एजुकेशन को सबसे ज्यादा बजटिंग नहीं दे रहे हैं, डिफेंस को सबसे ज्यादा बजटिंग दे रहे हैं? नहीं, आप किस बेसिस पे बोल सकते हो कि इंडिया के जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है, स्पेंडिंग है, वो सफिशिएंट है? यही मेन कंसर्न है जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे। कैसे बोल सकते हो कि सफिशिएंट है? नहीं, जो आई एम आस्किंग। नहीं नहीं, वी कांट से कि सफिशिएंट है। वही बात हमने यहाँ डिस्कस करी ना, सफिशिएंट आप किस बेसिस पे डिटरमाइन करोगे? अभी जो करंट चैलेंजेस हैं उसके लिए सफिशिएंट हो सकता है, वो भी एक क्वेश्चन है, डिबेटेबल इशू है। तो सर्टन है, यहाँ पे चीजें इतनी क्लियर नहीं है। फ्यूचर में जैसे हमने बात करी कि 40 डेज इंटेंस वॉर के लिए हम प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, टू फ्रंट वॉर के लिए क्या हम रियली प्रिपेयर्ड है या नहीं है? साउथ मतलब मैरीटाइम सेक्टर में या कोस्टल सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं, आर वी रियली प्रिपेयर्ड फॉर दोज अटैक्स और नॉट? गिवन की जो ओपोनेंट है या जो अटैक कंट्री होगी, उनकी जो गिवन एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी है, सो वो कुछ एरियाज हैं, तो हम नहीं बोल सकते कि वी आर सफिशिएंटली प्रिपेयर्ड। ओके। सो व्हाट कॉजेज इन्फ्लेशन इन इंडिया? डिमांड की सप्लाई साइड इश्यूज, ये हम बात करते हुए आए हैं। आफ्टर द कोविड-19 पैंडेमिक, इट इज मेजरली द सप्लाई चेन डिसरप्शंस व्हिच इज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेशन। सो सप्लाई साइड फैक्टर्स अकाउंट फॉर 55%। स्पेसिफिकली फूड इन्फ्लेशन की हम बात करते हैं, तो यहाँ हेडलाइन इन्फ्लेशन लिखा है। फूड इन्फ्लेशन और फ्यूल इन्फ्लेशन दोनों में सप्लाई साइड इश्यूज की वजह से वी आर सीइंग इन्फ्लेशन इन इंडिया। सो फ्यूल इन्फ्लेशन, सप्लाई साइड डिसरप्शंस बिकॉज ऑफ the geopolitical wars that is being going on, we are seeing कि अभी ऑफ लेट जो थर्ड सर्च एरिया ऑफ कंसर्न इमर्ज हुआ है, यमन में हूथी रेबल्स दे हैव अटैक्ड। सो उसकी वजह से जो ट्रेड होता था, 40% जो ऑयल ट्रेड इंडिया का होता था, दैट वाज थ्रू द रेड सी। सो दैट विल गेट डिसरप्टेड, सप्लाई साइड और डिसरप्शंस हो रहे हैं, प्राइसेस और ज़्यादा इंक्रीज होंगे, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज होगा, फॉरेक्स रिजर्व रिड्यूस होंगे। सो ये कुछ एरियाज है, इस तरीके से द इन्फ्लेशन, इसको बोलते हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, और ज़्यादा इंक्रीज होगी। So you can see कि supply side factors had predominantly driven the inflation in India since October 2019 due to excess rainfall. So monsoon की वजह से भी food inflation increase होती है and crop get damaged. तो significance demand side factors क्या है driving the inflation? So the intermittent increase post the COVID-19 waves also, because supply भी कम हो रहा था और demand भी ज़्यादा हो रही थी। तो demand side factors कुछ थे, but majorly it was dominated by the supply side factors. सो रशिया यूक्रेन वॉर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी अगेन डिमांड सप्लाई मिसमैच वुड बी द राइट टर्म यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक विल कंटिन्यू इन पार्ट 2। सो दिव्या कैन शेयर द लिंक। ओके मानसी।